Hi everyone, welcome back to the channel. I'm your host Dr. Seema Jain. Today is 12th of October 2022. How are you all doing? And I hope you are learning with my videos every single day. And I'm hoping that you're following me on my Telegram channel where I keep posting my research. And today we gave in the morning a lot of stocks which gave beautiful breakout. Like you can see the top gainers. I'll just show you the top gainers and I will show you how each of them performed. Like early morning I gave IDFC Limited, then we CUB, then we gave Chola Finance, we gave Power Grid. All of them have given a very beautiful breakout. So in this video, I'm going to talk about the Back Nifty price action and I'm going to give you some breakout stocks. Hope you like my work. If you like my work, please give a thumbs up and do share my video with others so that many more can learn and understand. And do join me for the live trading every single day. And I do the live trading from 11 to 12, 10 to 11, sorry. So 10 to 11, I do the live trading and see you all there. Let's go to the screen and talk about the stocks that I want to talk about. So here we go. So this is Back Nifty, right? I just want to show you what happened in the morning. This is how I have posted about Back Nifty. See here, I have written there's a breakout that has come. There's a triangle pattern breakout that has come in Back Nifty and the volumes have appeared, right? So I want to replay the whole thing for you. This is where we were and I'm going to action replay for you. So see here at the bottom, you can have a look at the volumes. I will show you the volumes, how the volumes are low. Like see here, I'm just going to draw a line for you. The volumes are low and here are the volumes. And then suddenly a breakout comes. Then suddenly a breakout comes after some time by oscillating between these two lines. Of course, the lines I have drawn after, like once these points were touched, I have drawn the lines. Now the volumes have appeared. See here, the volumes are coming up and the trend line is getting broken, right? Now after that, let's understand what is happening in the Bank Nifty. Now see here, there is a very strong resistance. See here, 39.0, 39.034 or 39.050. There's a very strong resistance and the next resistance is at 39.143. So these could be two hindrances that Bank Nifty may have. Okay, now see at this place, which is 39.40.50, there were some sellers which brought Bank Nifty down twice. They again got active over here at this place. You can see it. Now, because the strength of bulls is higher, they will, it will come down to this trend line, touch it, and then bounce from here, right? But you should know whether the bulls are stronger or the bears are stronger. How do you know that? For that, you need to understand how to read the data. Okay, if you know where the supports are developing, if you know what is happening in the options data, you will be able to understand what lies ahead. So see here, there was a huge fight between bulls and the bears at 39,000 because there are a lot of call writers who were active at 39,000. Now, whether they allow the market to go up or not will depend upon whether the 39,000 position has been unwinded or not. Okay, so I'm going to move the speed a little bit higher and let's see what happens. So the market is still oscillating between these 2 points. And let's see here again, the volumes have reduced, right? Again, the volumes have reduced. Now the volumes are appearing, right? And volumes are appearing and trying to break this barrier, which was created at 39,050. It touched the next level of 39,140 and came down, and again the volumes appeared. And now it's a confirmation that market does not want to stop, right? Why is it so? Because first market has overcome today's barrier, which is 39,050. Then it has overcome the barrier which it created yesterday. So 39,140, when it was broken, it looked to be heading up, and the next barrier could be 39,250 or 39,260. This could be your next barrier. We'll just watch till the end and we'll see when Nifty closes today. So
then you will be understanding, you know, how market behave. So right now it's about 3:15. Let's see how market does it give a final push and touches 39,270. If it is so, so yeah. So where market close is exactly yesterday's or yesterday or the day before's high position. So this is very, very strong resistance. 39,270 is a very, very strong resistance. So in front of you, I kept on marking the resistances and I kept on telling you what is happening with respect to volume. Hope there is a learning process involved in this whole sequence. Okay, now having said that, I have filtered out some stocks for you. तो मैं जो लोग हिंदी समझते हैं उनके लिए अगेन मैं दोबारा से इसको रिप्ले कर देती हूँ and I'm going to replay it from here एक बार. तो पहले आप देखेंगे कि मैंने सारे हायर लोज को कनेक्ट करते हुए और हायर लोज को कनेक्ट करते हुए और लोअर हाइज को कनेक्ट करते हुए एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया है. उसके बाद आई वाज लुकिंग एट द वॉल्यूम्स. मैं वॉल्यूम्स को देख रही थी कि वॉल्यूम में कहीं पे ब्रेकआउट आ रहा है क्या. देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बहुत नॉर्मल वॉल्यूम थे. आप देखिए 38,000 नीचे आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत नॉर्मल थे वॉल्यूम एंड देन सडनली एक ब्रेकआउट आया वॉल्यूम्स के साथ. मार्केट ऊपर गया बट यहाँ पे एक पास्ट रेजिस्टेंस है 39,050 पे. अगेन मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स में जबरदस्त एक फाइट हुई. उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया. यहाँ पे बियर्स रेडी बैठे हुए थे सेल करने के लिए और वो मार्केट को करीब 150-200 पॉइंट्स नीचे लेके आए. अगेन ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रही है और फिर से वॉल्यूम थोड़े ड्राई अप हो गए. तो आप देखिए जब ऊपर जा रहा है मार्केट, जब ब्रेकआउट दे रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दे रहा है, नीचे आ रहा है मार्केट तो लो वॉल्यूम्स के साथ, राइट. अब देखते हैं आगे ब्रेकआउट. अभी मैंने आपको दिखाया वैसे इंग्लिश के उसमें आप देखेंगे कि अब ये पिछले जितने भी बैरियर्स हैं सबको ब्रेक करेगा. 39,54 को, 39,150 को एंड 39,270 पे जाके क्लोज देगा. आप बोल रहे होंगे कि मैं देखिए वॉल्यूम्स अपीयर हुए, यहाँ पे वॉल्यूम्स अपीयर हुए और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया. इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट है, बहुत स्ट्रेंथ है इस ब्रेकआउट में. और उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट आया जो कि इस पास्ट बैरियर को ब्रेक किया है जिसने ट्रेंड लाइन बनाई थी और 39,150 का 140 का बैरियर था उसको ब्रेक किया है. यहाँ पे फिर सेलर्स बैठे थे, थोड़ा सा नीचे लेके आए ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट्स एंड देन अगेन देयर कुड बी अ बाउंस. सो फाइनल क्लोजिंग का हो रही है 39,270 पे हो रही है विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग एंड दिस इज हाउ मार्केट बिहेव. तो आप लोग सोचोगे कि मैं आपको एक पास्ट एनालिसिस दे रही हूँ. इस एनालिसिस को मैंने 12:09 पे अपने चैनल स्टॉक प्रो पे शेयर किया था. आपको अगर मेरे चैनल का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के सबसे ऊपर आपको मिलेगा लाइव ट्रेडिंग का लिंक और फिर उसके बाद आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा. यू कैन जॉइन मी देयर एंड आई हैव बीन अपडेटिंग कंटिन्यूअसली अबाउट व्हाट इज हैपनिंग in Bank Nifty. So see here how Bank Nifty finishes is very, very strongly. The last candle itself is also buying. End almost like in के half an hour there is continuously buying that was coming in the market. So that means जितना भी bearish sentiments थे they have been completely demolished. Let's see broader perspective में अगर आप इसको देखते हैं तो एक head and shoulder pattern बन रहा है. एक shoulder ये है, बड़ा सा head ये है और एक और shoulder ये है. अगर ये 39,500 के ऊपर 450 के ऊपर बैंक निफ्टी चली जाती है फ्यूचर्स में, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी वेरी गुड मूव इन अपकमिंग few days. So but let's कल एक्सपायरी, how expiry goes, कल एक्सपायरी में क्या गेम प्ले होता है, we'll see that tomorrow. So now let's start with some stocks that have pulled out for you for breakout. So I hope you saw my analysis today. I have given good stocks for buying today. I had given IDFC Bank, I had given CUB, I had given Chola Finance for a buy, I had given Power Grid for a buy, and I have given Godrej Consumer Product for a buy. All of them have given very, very beautiful breakout. So I have 5 stocks on my radar. The first one is Navin Flooring. Navin Flooring. So it looks very powerful to me with the kind of build-up that it has had. Past में देखिए क्या build-up हो रहे हैं और यहाँ से मैं अगर एक
चैनल ड्रॉ करती हूँ तो आज ये चैनल के एंड पे है और यहाँ से मुझे लगता है कि एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी नवीन फ्लोरिन में आती हुई दिखती है और 4712 के ऊपर अगर ये जाता है तो 4800 तक इसमें जाने की पॉसिबिलिटी इस स्टॉक को है। तो ये मेरा पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है 𝐼𝐵UL हाउसिंग फाइनेंस। सो 𝐼𝐵UL हाउसिंग इज हियर, राइट हियर। 𝐼𝐵UL हाउसिंग ने एक कंसोलिडेशन किया था ऑलमोस्ट लाइक अगस्त 22 से लेके अगस्त 15 सितंबर तक और उसके बाद नीचे गिरा था, फिर साइडवेज जाके रिवर्सल देके और स्टॉक थोड़ा ऊपर गया है। आज इसमें जिस हिसाब से बाइंग आई है उससे मुझे लगता है कि 131 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो हमको 135 136 के टारगेट इसमें डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। सो ये मेरा पहला स्टॉक है। द नेक्स्ट स्टॉक दैट आई हैव ऑन माय रडार इज LNT, राइट। LNT में आज अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दी है। LNT में एक अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दी है। आज इसने क्लोजिंग दी है 1940 पे। हमको एंट्री कहाँ पे मिलेगी? हमको एंट्री मिलेगी 1930 पे। We're going to get the entry in Lawson and Tubro above 1930 और एक बहुत strong pullback है इसमें after this open equal to high candle which demolished the all positive sentiments. Again there has been huge buying that has come in LNT. So above 1930 I see more opportunity for stock to go up. The next stock that I have in is the IDFC Bank, right? So I have already given IDFC. Now IDFC First Bank is also looking very promising. Have a look at the build up, right? If I just want to explain you, आप यहाँ से देखिए this candle has formed, उसके बाद gap up opening. I want you people to write me in the comment box what do you call this candlestick pattern. Rather let me just draw it for you because see आप लोग सीखोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। ये 3 कैंडल्स, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? मार्केट नीचे आ रही है गिरती गिरती, एक दिन एक व्हाट डू यू कॉल इट आइसोलेटेड डोजी बनती है, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग और उसके बाद मार्केट ऊपर चल जाती है। What do you call this pattern? Please write it in the comment box. And now crossing this barrier, which is 55.5, I feel the stock is going to move in the upward direction with more strength. Okay, so IDFC First Bank, because IDFC में already बहुत अच्छा strong movement आ चुका है। IDFC First Bank में आज huge amount of money has been deployed and it looks very promising to me. Then I have on my radar NTPC. NTPC looks very promising. Why? Look at the build up, right? Look at the build up. These candles are basically building up small candles and today there is a strength that has been seen. आज एक muscular power दिखाई दी है। आज ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर चलने की तैयारी में है। क्रॉसिंग 166 will be an important point. 166 क्रॉस होने के बाद ये 170, 172, 174, 176 के टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। इफ नॉट इन दिस मंथ, मे बी नेक्स्ट मंथ आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो ये मेरा एक प्रेजेंटेशन था, बट अगर आपने मुझे अभी भी टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है टू गेट माय रिसर्च, टू गेट द लाइव अपडेट्स, प्लीज डू जॉइन मी ओवर देयर एंड बी assured we'll be sharing the most authentic research with you. All the best, take care, see you in the next video with lot more things to learn about stock market. All the best, see you there.